everyone, welcome back to my channel. My name is Arambol and you are watching Vlogermunda. So guys, आज हम आए हैं आरंबोल डैम और ये नॉर्थ गोवा का सबसे हिडन प्लेस है और मेरे साथ हैं अली भाई. So बड़ा मजा आने वाला है आज. जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था और प्रीवियस वीडियो में आपने अली भाई को भी देखा था कैंप साइट पे और उस दिन से लगातार 5 दिन तक खूब बारिश हुई है. मैं आपसे कहा था कि मैं स्वीट वाटर लेक जाऊंगा, बट इस समय स्वीट वाटर लेक जाना सेफ नहीं है. तो हम और अली भाई आए हैं इस समय आरंबोल डैम, जो कि एक हिडन प्लेस है और आप देख सकते हैं. और नॉर्थ गोवा हो या साउथ गोवा हो, सबसे खास बात यही है कि टूरिस्ट प्लेस से ज्यादा यहाँ पर ऑफ बीट प्लेसेस हैं. तो हम चलें. सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. और हमारे साथ अली रहेंगे तो आज बड़ा मजा आने वाला है. और मैं पहले से कुछ नहीं कहने वाला कि मैं आज क्या करूंगा, क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो से जो भी मैं कह रहा हूँ वो हो नहीं रहा है मेरे साथ, तो मैं ये नहीं कहने वाला. आज आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और चलिए शुरू करते हैं. Arambol Dam, we are going! ये है हमारा हिडन प्लेस आरंबोल डैम और हम और अली भाई अब यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं. और यहाँ की एक सबसे खास बात ये है कि इस पॉन्ड में, इस पूरे आरंबोल डैम के इस पॉन्ड में बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं और वो डेड सेल खाती हैं. तो जब हम इसके अंदर जाएंगे तो ये बड़ा मजा आने वाला है. या श्योर. Feel the fish? Yeah, they start doing their work like hitting on my. All they want is dead cell. What I have to do? Just try to stay up with your legs. Put your hands up. The fear inside. The fear in your head doesn't let you learn. Yeah, but I will try. You have to do it fast. Okay. No, like this. Not like this. Like this? Yes. Like this? You're pushing this way. You have to push that way. Gravity is that way. No. So I have to be very aware. Okay. You see? Do you see my legs? Yeah. Okay. That's how I'm doing it. Like a fish, right? Like the fish tail? Like this. Okay. And then I can put my legs up.
ओह वाह अली भाई। सो ये कुछ ऐसा है आरंबोल डैम, और हमें तो भाई बड़ा मजा आ रहा है, हमें एंड अली भाई को। सो अगेन मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आप यहाँ पर आ कैसे सकते हैं। तो यहाँ आने के बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आप नॉर्थ गोवा में हैं तो फिर वही चीज़, आप स्कूटी रेंट कीजिए। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप स्कूटी रेंट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप गोवा आए हैं 10 दिन के लिए, तो 10 दिन के लिए एक साथ स्कूटी रेंट कर लीजिए, एक साथ पेमेंट करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो 10 दिन के लिए आप स्कूटी रेंट कीजिए और ऑफ बीट प्लेसेस घूमिए। टूरिस्ट प्लेसेस तो सब घूमते हैं, तो जैसे कि हम देखिए इंजॉय कर रहे हैं इस व्यू को, और आई एम डैम श्योर कि आपको भी ये प्लेस देखकर बड़ा मजा आ रहा होगा। तो फिर से मैं जा रहा हूँ। सो गाइज हम और अली भाई यहाँ एंजॉय कर रहे हैं इस आरंबोल डैम को, और मैंने सोचा क्यों ना अली भाई से कुछ एक्सपीरियंस ले जाए। तो अली भाई, विल यू शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ योर ट्रैवलिंग, लाइक योर life in last 2 or 3 years, how you came India and all that? Yeah. Well, I've been traveling it's been 5 years. Wow. But a year ago I came to India. Before the lockdown, before the corona start, I came to India. Like I traveled 4 years and I was like, maybe this is the right time to go to India. Yeah. Like, India, and I was like, if I go to India, I will gonna stay in India forever. Yeah. And it's happening. Yeah. I want to stay in India. So basically you love India, right? I love India. So what is the thing you love in India? Like what, your culture or food, or like what attracts you? Well, the nature. Yeah, the nature, right? The nature. First of all, the nature is beautiful. Like tropical climate is amazing. I love it. Like the fruits. Oh my God, fruits in tropical weather. So basically, you are from Iran, right? Yes. So what is difference between Iran and India in like in weather or in food? Well, India is very diverse. India has like desert, has mountains, and like tropical seaside. Iran is also diverse, but not as much as India. Iran is more like a dry country. We have mountains, we have the forest in north, we have the sea at the south, and also a big lake in the north, which we are sharing with Russia, Azerbaijan. Yeah. But yeah, I can say Iran is more dry climate. Yeah, but we have the mountains, we have the sea also. And the one thing you want to share with the Indian people, like if you want to tell them, yeah, come, or if you want to influence them, or you want to suggest them to come and visit India, so what is the place you want to tell them that come and visit? India? Yeah. Well, India, I have been in Goa, I have been in Kerala, I have been in Varanasi. And this is the 3 places that I have visited in India in 1 year. I don't like to travel very fast. I travel very slow. Slowly. So like 2-3 months one place, 4 months another place, like that. But I can say I love Goa because the Goa is like beautiful. Like we have the forest, you have the river, you have the sea, you have the lake, you have the little mountains here, and the people here is very nice. Like, the local people, I love the local. They are very people kind here. and very supportive, right? Yeah. ये एक चीज तो मैं खुद शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं केरी आया, जब नॉर्थ गोवा आया, तो ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव थे। बहुत मतलब आप अगर रास्ते पे चल रहे हैं तो आपसे वो खुद बात करेंगे, खुद पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो उनके साथ शेयर कीजिए। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी केरी की। तो कुछ एक्सपीरियंस मेरे यहाँ पर हुए, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यूपी बहुत बेकार है, मतलब यूपी उतना अच्छा नहीं है,
सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है। यूपी घूमने आइए, यूपी बहुत सही है। कुछ लोग मुझे मिले हैं ऐसे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि लाइक गुंडा राज एंड ऑल दैट। तो जनाब ये पहले होता था और हर स्टेट में कुछ ना कुछ कमियां हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैवल करने नहीं आएंगे। ट्रैवल करने आइए, घूमिए जनाब, घूमिए। घूमने से बहुत कुछ पता चलता है, बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। अली भाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सो ये बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा अभी तक का पिछले 15-20 दिनों में। और मैं सच बताऊं तो मैं यहाँ फिर से आना चाहूँगा, क्योंकि ये प्लेस मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सो यही कुछ है। थैंक यू। That's the beauty of Bollywood. My favorite Indian music is ये है पूरा आरंबोल बीच, आप देख सकते हैं।